चलो जी स्टार्ट करें। सर हाँ जी सर आप बस रिवीजन करा रहे हो कि स्टार्टिंग से ले रहे हो? बेटा मैं पूरा इन डेप्थ लूंगा, है ना? ओके सर। But last Ashna ma'am has taken the class. Now I am taking. There will be some changes will be there, and I believe it will be helpful. So it's मतलब one class will be on plant reproduction. I'm not taking asexual and sexual separately, you know. I'm just taking plant reproduction first and then animal reproduction. So let's see, 1.5 hour session is there, so should be able to finish this. So reproduction, Hanji, what is reproduction? Anyone? फटाफट है ना? What is reproduction? क्या वजी? No one? So reproduction is the biological process by which the organism produce offspring for the purpose of continuing the species. For continuation of species. Very good. Okay. So reproduction is, you have said it very well, है ना? It's a biological process for producing offspring for continuation of species. Both the things, है ना? ये तीनों पॉइंट जो है important, equally important है. तो full reproduction chapter we are divided into reproduction. आपके syllabus में it's divided as asexual and sexual. I am dividing it as plant reproduction and animal reproduction. So in plant reproduction, we'll be taking it as asexual and sexual reproduction. So anyone, what is asexual reproduction? A process in which the organism reproduces on its own without the help of another individual. Is it? Okay, when you talk about a flower, है ना? Flower is a bisexual भी होते हैं flowers, है ना? They are unisexual also. Most of the flowers are bisexual. ठीक है, जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है बाय इट्स ओन जो है इट कैन रिप्रोड्यूस. So will you take it as sexual reproduction or asexual reproduction? There are few animal species are there which have got both male and female reproductive part, and they individually can produce the offspring. Dinosaurs में भी there were species are there, है ना? आपने जुरासिक पार्क देखी है मूवी? Yes sir. है ना? अब जुरासिक पार्क में जो है वो कंट्रोल रिप्रोडक्शन करना चाहता था ना. ही जो ओनर था, he has had everything in place whereby he said we'll control number of dinosaurs which are getting produced, but finally it was revealed that one of the dinosaur it changed its orientation. उसने अपना sex change किया and that produced more offsprings, है ना? So there are few, actually there are few reptiles are there, few fish are there which either possess both the male and female parts, or they can change their gender and produce offspring, and that will be counted as sexual, you know? So what is actual, what's the main difference between asexual and sexual? So asexual में सिर्फ one parent required होगा. भाई ये किसने ज्वाइन किया है? So एक सेकंड में नेम बोलना भूल गया. And what's your name? So Sehajpreet. Sehajpreet, okay. ठीक है Sehajpreet. तो asexual में what you're saying is gametes जो है वो involved नहीं होते हैं ना? So that's the main thing. So asexual में you will say there is no union of gametes or sex cells, you know? Gametes are same as sex cells, and in sexual there is a union of gametes.
ठीक है, यू विल से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स अपना यूनाइट करते हैं तो व्हाट दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट, एंड देन यू विल से यूनियन मतलब यूजुअली, फर्टिलाइजेशन है। हाँ जी, यूनियन मतलब हाँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है ना। एसेक्सुअल में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सेक्सुअल में देयर इज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज देयर। Usually one parent, usually two parents, you know, and here you will say that formation of clone, no clones, and you have got, ये हम differences बाद में अच्छे से दोबारा करेंगे, no clones and you have evolution is possible, ठीक है। अब asexual में जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में asexual रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है भाई? Vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड, चलो ये एंड वाला पार्ट हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है, बट इट इज 99% इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज देयर। सो हियर आई एम मेकिंग इट, दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बताओ भाई ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? हाँ जी, नो वन, नो वन। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था, यू आर गेटिंग 0। अगर आपने लिखा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वन ऑफ द वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यू विल नॉट गेट इवन हाफ मार्क। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? Sir, parent plants is specialized सब reproductive structure काटते हैं जैसे कि bud, root, stem. Still 0. So when the reproduction is done through the vegetative part of the plant, like leaf, stem, root, and it can be artificial or it can be natural. Okay, from my side, अच्छा आपने देखो, even if you are googling it, है ना, आप गूगल भी करेंगे तब भी I am okay with it, है ना, only thing is you should answer it, ठीक है। So what is vegetative propagation? The plants has got two parts are there. One is vegetative part, another is reproductive part. Reproductive parts is your flowers, seeds, fruits. These are the reproductive parts. Vegetative parts are roots, stems, leaves. These are vegetative part. So reproduction, which is there with the help of vegetative parts of the plants, is called as vegetative propagation. ठीक है जी? Yes, sir. सर एक और बार समझा। हाँ जी, आप लिख लें ना, रिप्रोडक्शन with the help of vegetative parts of plants. That is, you have got stem, roots, leaves, extra. जो reproductive part है, those are your flowers, fruits, seeds. Those are called as reproductive parts. So Prisha is saying, sir, plants which have lost their ability to produce seeds use this method of reproduction. ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रोज प्लांट है, वो स्टेम कटिंग से भी आप जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ फास्टर मींस आर देयर, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो यहाँ पर विल डिस्कस ऑन दैट। तो
ठीक है, vegetative part will take it separately. So we have got another is, you have got is budding is there. ठीक है, जैसे yeast में budding होती है वैसे ही इन plants में budding होती है. For example, cactus में budding is there, duckweed is there, duckweed, है ना, budding is there. Then you have got fragmentation. Fragmentation is in Spirogyra. सर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट और नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या डिफरेंस है? नॉन वेजिटेटिव पार्ट नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट. दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट्स ऑल. प्लांट्स अगर फ्रूट्स बनाता है तो इट्स नॉट स्टोरिंग द फूड फॉर इटसेल्फ. नो 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 नो. प्लांट को अगर अपने लिए फूड स्टोर करना है, जो एक्स्ट्रा स्टार्च बना है, इट विल स्टोर इट इन स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, है ना, दैट इट विल कंज्यूम इन फ्यूचर. ठीक है, बट एंड दोज वी कॉल एज वेजिटेबल्स, उनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं. और जहां पर सीड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज sole purpose is for the reproduction. Those are called reproductive part. The reproductive parts includes your buds, flowers, seeds, fruits, है ना, these are reproductive parts of the plant. ओके सर. ठीक है जी. So I am taking vegetative propagation again. तो भाई कौन से दो पार्ट हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? वन इज Actually, natural, another is artificial. ठीक है जी. अब नेचुरल की बात करेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने आप हो रहा है. Plants are producing their own clones by themselves without the help of human being. ठीक है. अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, है ना, 3 बार किया है सिद्धांत ने. सिद्धांत कौन कौन से है वेजिटेटिव पार्ट? स्टेम, रूट, लीव्स. स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. तो इन तीनों से ही करेगा फिर वो प्लांट रिप्रोड्यूस. ठीक है. सो नेचुरल वे में प्लांट कैन रिप्रोड्यूस, नंबर 1, बाय स्टेम मॉडिफिकेशन. स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब है उसने अपनी स्टेम जो है वो मॉडिफाई कर ली है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेम द प्लांट इज रिप्रोड्यूसिंग बाय इटसेल्फ. वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. स्टेम मॉडिफिकेशन कैन बी डन बाय द प्लांट्स इन 2 ways. प्लांट 2 ways में स्टेम अपनी मॉडिफाई कर सकता है. नंबर 1 इज सब एरियल. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट एक ओवरऑल व्यू आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. एंड नंबर 2 इज अंडरग्राउंड. सब एरियल का मतलब क्या होता है भाई? वॉशिंग पाउडर, हवा में. और सब का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा. तो थोड़ी सी हवा में, मतलब ये जो स्टेम है, दिस इज अ स्टेम, है ना, दिस इज नॉट अ रूट, बट दिस स्टेम इज जस्ट अबव द ग्राउंड. ये ग्राउंड के जस्ट ऊपर है. रिप्रोड्यूस करना है तो ऑफ कोर्स प्लांट हवा में तो पैदा नहीं होगा नया, है ना, इट हैज टू बी इन द सॉइल. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेम इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ जस्ट अबव द सॉइल, है ना. और दूसरा क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्टेम है ये अंडरग्राउंड है, मतलब सॉइल के अंदर है, एंड इट हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ टू रिप्रोड्यूस. अब आप इस चीज को समझे, सॉइल के अंदर एवरीथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड द सॉइल इज नॉट रूट, है ना. रूट जो है इज नॉट डिफाइंड साइंटिफिकली एज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग अंडर द सॉइल. रूट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? अरे Sir, a part which uses osmotic pressure to transfer nutrients which and is solving the purpose of absorbing the nutrients and the water from the soil, है ना, and it's anchoring the plant.
ठीक है। एंड रूट के जो है ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट विल हैव रूट हेयर्स विल बी देयर, पर्टिकुलर रूट सेल्स विल बी देयर, ठीक है। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम्स जो है दे विल हैव xylem phloem will be there, they will have nodes, है ना, internodal points will be there, that is qualified as stem. So location does not qualify root or stem, it is the purpose which is qualifying it, ठीक है। तो सब एरियल, तो सबसे पहले हम सब एरियल की बात कर रहे हैं। सब एरियल में what comes is runner, ठीक है। रनर में व्हाट्स हैपनिंग इज जो आपका स्टेम होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, अभी फाइल लोड हो गई है तो आई टेक इट इन दैट। जस्ट अ सेकंड। Okay, let's discuss it out first, then I'll show you the pics also, है ना। So runner में you have got a plant is there, ठीक है, ये आपका बेटा प्लांट है, और यहाँ पर one stem will get modified, ये एक stem modify हो गई है, and this stem is running on the ground, ये ground पे ऐसे run कर रही है। Now this is a stem, so it will have some nodal internodal points will be there, and from those nodal internodal points new plants are growing, है ना, नए plants आपका grow कर रहे हैं। Got this? Example for this is strawberry, है ना, famous example। कहीं पर भी कुछ भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे about runners, you will definitely find strawberry will be there, and your famous Bermuda grass is there, not normal grass, है ना, it's Bermuda grass which I am talking about. Normal grass is underground runner, तो we'll see, है ना, वो underground runner का क्या मतलब होता है। Runners clear है सबको? Second is stolen. Stolen is when you have got, this is your plant is there, ठीक है, one of the stem it gets modified and it bends and it enters into the soil, and you have got new plant is coming from that point. This is stolen. सर ये रनर और स्टोलन एनसीईआरटी में है क्या? बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। दिस इज देयर इन एनसीईआरटी, नॉट इन 10th बट 7th की एनसीईआरटी में इट इज देयर, एंड few questions, similar questions are there in NCERT exemplar. ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन डिटेल और डीप। सर इसके एग्जांपल। हाँ जी, स्टोलन इज योर जैस्मिन फ्लावर इज देयर, ठीक है, बस एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव गॉट सर्कस इज देयर, है ना, इन दैट इट इज मिंट, आप लिख लें, आई विल शो यू द डायग्राम एंड देन विल डिस्कस ऑन दिस। ऑफसेट इज देयर, एंड दिस इज योर वाटर लेट्यूस। जब हम अंडरग्राउंड की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड स्टेम, फेमस स्टेम कौन सा है भाई? पोटैटो। पोटैटो, एंड पोटैटो इज कॉल्ड एज स्टेम ट्यूबर, है ना। स्टेम ट्यूबर का मतलब क्या है? पोटैटो के केस में क्या होता है, ये आपका पोटैटो का जो प्लांट है, ठीक है, दिस इज हैविंग रूट्स आर देयर, दिस इज योर सॉइल इज देयर, सो हियर वन ऑफ द स्टेम will grow underground, ये surface पे नहीं है, this is underground, not subaerial, and this grows like this, these stems are growing like this, and the end of the stem stores the food, and you have got potatoes growing on this,
ठीक है, तो पोटैटो इज पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है, ओनली थिंग इज इट हैज stored starch for the plant and that's why it has swollen up and you call it potato. सर ये जो सब एरियल और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन है कि ये रूट होता ना ना स्टेम मॉडिफिकेशन है ये बेटा, देखो मेन हमारी हेडिंग तो स्टेम मॉडिफिकेशन में ही चल रही है, है? सर ओके। ठीक है, स्टेम के अंदर जो है यू हैव गॉट सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। सेकंड फेमस स्टेम इज योर बल्ब, ठीक है, बल्ब में कौन सा आएगा बेटा आपका, Onion. ऑनियन, ठीक है, सो ऑनियन में व्हाट्स हैपनिंग इज, देखो ये आपका जो है दिस इज योर, अच्छा इनसे देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपका जो पोटैटो है, पोटैटो इज हैविंग बर्ड्स इन इट, ठीक है, तो पोटैटो में अगर 5-6 बर्ड्स हैं तो यू डिवाइड पोटैटो इन 5-6 पार्ट्स एंड यू put it into the soil, so each part new potato will start growing up, है ना, so here you say stem tuber potato and then you write down having eye or bud। बल्ब के केस में आपका जो स्टेम है दिस इज देयर, इस स्टेम से रूट्स निकल रही है एंड these are your modified leaves which are storing the food, ठीक है, एंड this particular part है ना, this is what we call as modified stem, this can grow new onions। आप अनियन को अगर आप दबा रहे हैं कहीं पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट चाहिए न्यू अनियन ग्रो करने के लिए, ठीक है, एंड दिस पार्ट विल स्टार्ट ग्रोइंग न्यू अनियंस इन इट, ठीक है, एंड दिस यू राइट डाउन एज राइजोम, राइजोम में एग्जांपल इज जिंजर and this is com, ठीक है जी, आगे करें। सर एक्सटेंड हो गया। ओके कॉम में एग्जांपल इज गार्लिक, सर कैन एक्सप्लेन रीजन क्या होता है? राइजोम बेटा, अच्छा राइजोम इज जो आपका जिंजर टर्मरिक है ना, दिस इज प्लांट इज देयर और यहाँ पर जो है दिस स्टेम इज ग्रोइंग, है ना, ये स्टेम जो है ये फोल्डेड वे में रहेगी, जैसे आप जिंजर देखेंगे जिंजर ऐसे करके ग्रो कर रही है, जिंजर फुल इटसेल्फ इज अ स्टेम इज देयर, और जिंजर के अंदर जो आपको फोल्ड्स नजर आएंगे दोस फोल्ड्स आर द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर देयर, तो आप जिंजर को अगर सॉइल में एज इट इज आप दबाते हैं तो इन नोडल पॉइंट से जो है न्यू प्लांट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग अप, है ना, तो जिंजर if you will put ginger with one node, at least one node in it, in the soil, then new plants will start growing from it. This is rhizome is there. ओके वो प्लांट्स जिंजर के ही होंगे ना? हाँ जी जिंजर के ही होंगे बेटा। ठीक है जी, आगे ले लें।
Yes. So stem modification के बाद next one will be what? Roots. Roots. Root. It is modified roots. जैसे stem tuber है ना बेटा आपका, है ना, where it is storing the food. Same way roots are there. So roots will store the foods and you will call them as root tubers. Just give me a second. हाँ जी, modified roots में example क्या होगा? Famous example, sweet potato. So modified stem is, potato is modified stem, sweet potato is modified roots. ठीक है? So plant is usually just saving its excess of food in roots to be consumed later on, which we are consuming. ठीक है? So anything which has got seeds is botanically, biologically a fruit, and anything which is a leaf, stem, or your roots, those are your vegetables. ठीक है? So we say that cucumber, tomato, brinjal, these are vegetables, but actually they are fruits. Botanically they are fruits, है ना? So cucumber is a, or tomato is a fruit because they are having seeds in it. So after modified stems, you have got propagation by leaves. तो लीव्स के थ्रू कैसे प्रोपोगेट करेंगे भाई? सर लीव्स के थ्रू और छोटी छोटी लीव्स आ जाती है ब्रायोफाइलम में. हाँ जी. So it is usually from the plant, the leaf जो है that falls down from the plant. तो ये जो leaf है, this is not a dry leaf which is falling from the plant. It's a fresh green leaf is there. Only thing is from its edges, edges has got new embryos are there from where, not new embryos, its edges has got your meristematic cells are there जहाँ से जो new plant will start growing up. So by leaves your example is bryophyllum. ठीक है? This was natural vegetative propagation. Now we'll be discussing artificial vegetative propagation. हाँ जी, artificial में बताओ आप. First one will be what? By cutting. Grafting. So by cutting. ठीक है? कट करके आप कैसे कर सकते हैं? By stem cutting. Stem cutting में जो famous है that is your rose plant is there. तो आप किसी भी रोज प्लांट की स्टेम कट करें and then you put it in a soil and new rose plant will start growing from that. ठीक है? आप उस स्टेम को पूरा का पूरा you are not putting into the soil, है ना? You are just putting a part of it where you have cut into the soil and it will turn out into a new plant. ठीक है? तो यहाँ पर ये जो कटिंग है ये यूजुअली जो है नोडल पॉइंट्स पर होती है. नोडल पॉइंट्स पर आपका इंटर कैलोरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं and it helps them in growing fast. Another is by root cuttings. आप सिर्फ roots जो है part of roots आप कट करके पूरा का पूरा you submerge it into the soil and new plant will start growing from that. तो root cutting में जो है your famous example is your blackberries,
raspberries, also rose, and then you have got leaf cutting. So you cut the leaves and put it into the soil and new plant will start growing up. And leaf cutting mein you have got that snake plant. Anyone, what you call that snake plant? आपने देखा होगा? Mother-in-law tongue. हाँ जी, मदर इन लॉ टंग. ये बड़ा अच्छा नाम है। हाँ जी. क्यों लेकिन? क्यों? क्योंकि ये किसी ने बस नाम दे दिया, फनी नाम, और वो चल पड़ा है. क्योंकि ये इट्स इन द शेप ऑफ टंग ओनली, सिंगल लीव्स होती हैं आपका, है ना. दिस इज लाइक दिस, है ना. ये प्लांट ऐसे करके होता है. ठीक है. सर हमारे घर में है ये। हाँ, इसमें येलो ग्रीन कलर का पार्ट होता है. तो इसमें अगर आपने यहाँ से बेटा लीफ कट की और इसको आपने जो है पॉट में डाल दिया है, ठीक है, सो न्यू प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग अप. सो माय मदर सर इज हमने तो डूइंग ट्राई दिस. भी कर रखा है, हो गया था क्योंकि हाँ, हमारा नहीं, डेड हो रहा था तो हमने ऊपर से पाट के उसको फिर उसमें रख दिया सॉइल में, और ये पूरा कैन यू ग्रीन ही स्टार्ट? होता, वो येलो येलो सा होता है येलो, नीचे। हाँ, येलो डार्क ग्रीन, है ना, कॉम्बिनेशन इज देयर. सर पर इसमें फिर स्टेम क्या होता है? सिर्फ लीव ही होती है? इसमें लीफ ही होती है. लीफ इज fulfilling both the functions of stem also, that's giving the support, and it has, मतलब मोटा सा रहता है इसके लिए? हाँ, मोटी लीफ रहती है. बिल्कुल सही. सर एलोवेरा भी मतलब एक स्टेम हो गया सेम जी? टाइप. एलोवेरा इज योर, it's a leaf is there beta, है ना. Stem is basing in aloe vera, or maybe it's modified stem, है ना. Leaves have turned out into spines, not very sure. हाँ जी, इसमें नेक्स्ट वन क्या लेंगे हम? बाय ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं आप? सर शीएन और स्टॉक सर, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दो डिफरेंट प्लांट्स का कनेक्ट कर देते हैं और उसको हाँ नॉर्मल जी, प्लांट की तरह बना देते हैं। वेरी गुड, इम्प्रेसिव. सो स्टॉक इज योर root part and cyan is your stem part. ठीक है. And they are of similar varieties, similar variety with requisite features. सर तो इसका आपका, मतलब हाँ जी, इसका मतलब है, देखो होता क्या, मैं आपको बताऊं, है ना. जैसे आपने एक प्लांट लिया, उसकी रूट्स तो स्ट्रांग है, बट ऊपर में जो स्टेम्स हैं वो वीक हैं, है ना. और आप एक ही प्लांट पर जो है, यू वांट टू ग्रो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आप ग्रो करना चाह रहे हैं. तो इट इज पॉसिबल कि सेम ट्री पर जो है आपके पास 15 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आप ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. उसके लिए व्हाट दे डू इज दे यूज ग्राफ्टिंग. तो ग्राफ्टिंग में जैसे आपका जो है एक प्लांट जो है बेटा, ये ऐसे ग्रो करना शुरू हो गया है ना. अभी इस प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगे हैं. सो व्हाट दे विल डू इज, इन द फर्स्ट ईयर प्लांट्स में कुछ जैसे मैंगोज है, उसमें 4-5 ईयर्स के बाद फ्रूट्स आने शुरू होते हैं. सो दे विल कट दिस स्टेम, वो इस स्टेम को कट करेंगे. और यहाँ पर जैसे मान लो ये जो है, दिस इज ऑफ जो देसी आम होता है ना, उसका ट्री है. तो ये स्टेम कट कर दिया इन्होंने, और इस स्टेम को कट करके यहाँ पर जो है दे विल पुट स्टेम ऑफ अदर वैरायटी ऑफ मैंगो, और इसको यहाँ पर जो है वो बैंडेज कर देंगे, है ना. सो आफ्टर व्हेन यू रिमूव दिस बैंडेज, यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ दिस हैव फ्यूज्ड टुगेदर. ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं. ठीक है. इसमें जो मतलब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सेम वैरायटी होना चाहिए. और ये आपका मान लो दिस इज योर स्टॉक इज देयर, ऊपर में दिस इज योर साइन इज देयर. तो इनको फ्यूज करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर इज देयर, है ना. दैट इज
either you cut them like this, दोनों को आप ऐसे cut करें. So when you are cutting it like this, उसके बाद जो है fusing जो है that will go better. आपने ऐसे अगर cut किया है, उसके बाद दोनों को साथ में करें and then you bandage both of them. Or you can do the fusing like this कि ऊपर जो sign है that is in this shape and stalk is in this shape. And then you have fixed it, then you have bandaged it. And what happens is यहाँ से ये जो आपका vessels है ना, xylem phloem, so this gets fused with the xylem phloem on the top and it becomes the part of the plant. And on the same tree you can have different varieties. In fact, it's possible to have different fruits on the same tree with the help of grafting. Understood? Hanji Siddhant? Yes, sir. देखते हैं एक बार अगर लोड हो गई है हमारी पिक्चर्स. अच्छा इसमें यहाँ लोड हुई है. Sorry. Let's see this fix here. So you have got, this is modified stem is here, you know, runners are there. So runners may one particular stem, it will keep on running throughout. And example for this is Bermuda grass or raspberries are there, you know. These are normal plant, normal stems are there. And these are your modified stems are there, which are doing reproduction. Okay, this is a raspberry plant. Not raspberry, strawberry plant. Runners clear hai? This is what stolen is there. Stolen में one of the stem gets bent, है ना. ये stem जो आपका bend हो जाती है. तो ये stem जो bend हो गई है, then it is going into the soil and it is producing new plant. So sometimes जो stolen है, they need some extra support from you. So farmers will do is they will put a clip here, है ना. यहाँ पर clip लगा देते हैं और यहाँ पर ये जो soil के अंदर जा रहा है, this must have a nodal point in it, है ना. इसके अंदर एक nodal point होना जरूरी है. ठीक है. And from there the new plant is emerging out. These are stolons are there, है ना. This plant was there, one of the stem is modified and bent. Stem is modified and bent and it's entering into the soil to produce new plant. ठीक है. In circles, one of the stem जो है that is just underneath the surface and it's running straight. It's not a thin stem, it's a thick stem. It's running straight and from the nodes new plants are coming out. This offset is being seen for water lettuce, whereby a water lettuce is producing its own clone in the close proximities. ठीक है. ये किसका एग्जांपल है? This is suckers are there, which is underground stems are moving and from there the new plants are coming out. Okay. Sir? हाँ जी. सर रनर और ऑफसेट में क्या डिफरेंस है? बेटा रनर्स सरफेस के ऊपर रन कर रहे हैं और एक रनर जो है इट कैन प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स एंड इट्स रनिंग ऑन द सरफेस थ्रू आउट द फील्ड. ऑफसेट जो है वो आपका जो है it is only one offset is being produced by one modified stem. Okay. These are underground stems are there, so they can do the reproduction by asexual means. This one is your stem tuber, that is potato. From bud or eye, the new plants are coming out. This is rhizome is there.
Rhizome is underground modified stems. Example is turmeric, ginger. These are the nodes are there, है ना? ये आपका जो है nodes हैं जो आपका stem की nodes होती हैं. And ginger आप break करके if you will put it into the soil, the new ginger plant will come out. This is corm is there. Corm में आप है ना ये भी for few particular vegetables are there. इनको जब आप soil में डालेंगे तो यहाँ से corm birds will start coming out. ठीक है? And these corm birds will have new plants coming out from them. और फिर इन corm birds को जो है you can put separately into the different soils. And this is bulb, which is your onion is there having modified leaves. Onion की जो ना बेटा these are the leaves of the onion plant, and this is the stem is there. तो आप onion को एक glass of water में डालें, है ना? It will float on the top. ये top पर float करेगा, and you will find here the roots are coming out. So from it a new plant can be grown. Clear है? जो आपका बनानास हैं, बैम्बू ट्रीज हैं, ठीक है? These all grow by modified stems. Mainly these are rhizome is there. Grass is also an example of rhizome. This is example for corm, है ना? You can see corm में नीचे जो है new birds are coming out. Example is garlic for this. Then we had root tubules are there. Root tubules may plant store its food, mainly starch, in the roots, and we eat those roots. Okay? Example for this is carrot, sweet potatoes, cassava. These are the examples. And these roots, you know, you just submerge it into the, you put it into the soil, and new plant will start growing from it. This is your bryophyllum is there, where the new plants is growing from a edges of the leaves. This is at your asexual reproduction by budding, you know. These are duckweeds are there. So these plants, they produce buds, and those buds grows into a new plant. Then is your artificial propagation. So artificially we have seen one of them is cutting. You do the cutting of stem, leaves and roots, and you put it into the soil. One we have discussed, we were discussing just now is grafting. Then third one is layering, and fourth one is your tissue culture. So let's see on this. So this is what grafting we were discussing. So grafting different ways are there, है ना? Cuttings में this is one more way is there, जहाँ पर आप stalk जो है उसको बीच में से you tear it off, and जो cyan है that cyan you put into this shape, है ना? इस shape में आप cyan को cut करते हैं, and then you put it inside the stalk. So main thing is कि they have to be of similar varieties and they should fuse together, and usually it takes a month of bandage for them to fuse together. This is one of the example. ठीक है जी, grafting clear है सबको? Yes, sir. Grafting is done for decorative plants also, है ना? Decorative plants में भी grafting की जरूरत होती है. तो ये आपका grafting होने के बाद once they fuse together, then it can't be separated. This is result of grafting. Two cactus plants, different variety but same species, है ना? Grafting में two stems are being fused together. यहाँ पर दो stems को आपस में fuse कर दिया.
and this can be done to achieve different purpose. You know, these are your decorative plants are there. So these are usually achieved with the help of grafting. Okay, next is your layering is there. ठीक है, लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स है ना. लेयरिंग में क्या होता है बेटा, आपका वन इज ग्राउंड लेयरिंग एंड अनदर इज एयर लेयरिंग. तो लेयरिंग में ग्राउंड लेयरिंग इज सेम एज योर, जहां पर आप स्टेम को बेंड कर रहे हैं सो दैट इट गोज इनटू द ग्राउंड, दैट इज सिमिलर टू स्टोलन, है ना, स्टोलन की फॉर्म में. बट यहाँ पर आप मैन्युअली फोर्सफुली जो है यू आर पुटिंग द स्टेम अंडरनीथ इट विद अ नोड इन इट. एयर लेयरिंग में व्हाट यू आर डूइंग इज, आप जैसे बेटा ये प्लांट है ना, दिस प्लांट इज देयर, अब रिप्रोडक्शन करना है आपको, यू वांट मोर ऑफ दिस प्लांट्स. सो व्हाट दे डू इज एट दिस पॉइंट दे विल रिमूव द बार्क, यहाँ से वो बार्क जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, सो दैट इट जस्ट रिमेन अटैच्ड हियर. बार्क के साथ साथ में दे विल गो लिटिल बिट मोर इनसाइड सो दैट द आपका जो वेसल्स हैं दोज आर आल्सो रिमूव्ड, है ना. जाइलम रिमेन्स देयर बट फ्लोएम इज रिमूव. तो फ्लोएम जो वो बार्क के जस्ट अंडरनीथ होता है, तो यू रिमूव स्लाइटली मोर डीपर देन द बार्क. नाउ दिस स्टेम इज नॉट गेटिंग एनी फूड. थ्रू जाइलम इट इज गेटिंग वाटर and minerals, but it's not getting any food. Okay, so what happens is, and then you put a soil around it. यहाँ पर आसपास में you put soil. In addition to soil, you put organic material and fertilizers, है ना, manures, and then you seal it. आप इसको seal कर देते हैं. So what happens is after some time, this stem will start growing roots from this point. यहाँ से वो roots grow करना शुरू कर देगा in this soil. And once this has started growing, after a week, then you remove it and you cut it from here. आप इसको यहाँ से cut करें, and then you have got a new plant there with you to be put, है ना. आप इस plant को कहीं और ले जाकर डाल लगा सकते हैं. Understood this? This is air layering is there. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी रूट्स जो है वो यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं. And once it has started developing here, you remove this poly bag, cut the stem and put it into the soil. This is air layering. So layering is of two types, ground layering and air layering is there. ठीक है, stem cutting is sugarcane, rose, grapes are there. तो स्टेम कटिंग में यूजुअली जो है वो नोड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ना. नोड पॉइंट से बहुत ऊपर भी कट नहीं करना है, नोड पॉइंट से बहुत क्लोज भी कट नहीं करना है. नोड पॉइंट से एक रिक्विजिट डिस्टेंस होता है, वहां से कट करके देन यू विल पुट इट इनटू द सॉइल फॉर न्यू प्लांट टू ग्रो. Sir, which plant is this? दिस वन, रोज प्लांट, है ना. रोज इज परफेक्ट एग्जांपल फॉर रूट कटिंग. सो बाय कटिंग हो गया हमारा, एंड देन इज योर बाय लेयरिंग. बाय लेयरिंग के एग्जांपल कौन से थे भाई? ग्राउंड लेयरिंग, and air layering. And last one in this is by tissue culture. ठीक है, टिश्यू कल्चर में यू आर multiplying plant cells and tissues in lab.
ठीक है, with help of hormones. तो यहाँ पर आपका जो है बेटा रैपिड मल्टीप्लाइंग हो रहा है एंड एक बारी में बहुत सारे क्लोन्स बन रहे हैं आपके प्लांट के, है ना। एक रिक्विजिट स्पीशीज है तो उसके बहुत सारे क्लोन्स आप एक साथ और बहुत फास्ट बना पा रहे हैं। तो ये कहाँ पर यूज करेंगे आप? यूजुअली आप जहाँ पर आपका एग्रो बिजनेस होता है तो वहां पर एक लैब भी सेट कर लेते हैं। उस लैब में जो है दे डू टिश्यू कल्चर टू मेक दिस वेराइटीज इन लार्ज स्केल। ठीक है, सो दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज। आपका जो बडिंग है और फ्रेगमेंटेशन है ना, दैट विल डिस्कस इन एसेक्सुअल इन एनिमल्स, है ना, उस टाइम ही हम डिस्कस कर लेंगे उसे। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हाँ जी, कॉपीड। करें भाई, प्लांट्स का कर लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई है जिसने कॉपी नहीं की है? ठीक है, तो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले तो हम फ्लावर की जो है पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फर्स्ट पार्ट कौन सा लेंगे हम? हाँ जी, हेलो हेलो। स्टेमन। स्टेमन, सीधा स्टेमन। जस्ट अ मिनट बेटा। The petals and sepals. हाँ बोलो पिंगा। हाँ जी, इट इज फर्स्ट वन इज सेपल, है ना। और ये जो पार्ट्स है, इन The पार्ट्स को हम sepals, क्या बोलते हैं? petal. इट इज सेपल, नंबर 2 इज पेटल, नंबर 3 इज Pistil, stamen. stamen, and number 4 is pistil. In parts of flowers को we call it as whorls, है ना, 4 whorls of plant. So in those 4 whorls, first one is your sepal is there. So sepal is outermost wool. It is green in color and protect bud. Sepal, sorry, petals, colorful wool. इसका काम क्या है भाई? Attract insect. सर इंसेक्ट्स को Attract. अट्रैक्ट करना ताकि वो आके उसके सीड्स या
For दूसरी चीज वो पॉलिनेट करने के लिए। पॉलिनेशन, सीड वीड तो अभी कहाँ बने हैं भाई, यहाँ पे सिर्फ जर्म सेल्स हैं अभी, है ना। एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब मेल पार्ट में जो है दो पार्ट्स हैं मेन, है ना। दो टू पार्ट्स आर फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कोई काम नहीं है इसका। एंथर इज द कैप्सूल, एंथर इज कैप्सूल होल्डिंग, क्या होता है भाई एंथर के अंदर? पॉलन। सर ये आपने वोल्ड क्या लिखा है? वूल साहब बेटा जो प्लांट है उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, दोस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड 4 वूल्स ऑफ प्लांट, है ना। सो दोस 4 वूल्स हम वी राइट दोस 4 वूल्स लाइक दिस आल्सो, जहां पर वी से कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, दिस इज ऑफ सेपल्स, देन कम्स योर पेटल्स, पेटल्स के बाद जो है दिस इज योर स्टेमन इज देयर, एंड देन इज योर pistil is there. ओके सर। So pistil is center part, है ना, this is center part, this is the main part, and this is female part. Pistil is also called as carpel, and pistil is made up of 3 things. One is stigma, style, and ovary. Stigma क्या है हमारा? Stigma is sticky top part to attach pollen. Style is tube like structure, है ना. Ovary is it holds eggs. Sir, eggs of female part. Eggs और फीमेल पार्ट बेटा, ये पूरा तीनों मिलाकर फीमेल पार्ट बोलते हैं। Sir, I am saying eggs of female part. हाँ जी, एग्स ऑफ फीमेल पार्ट। And then you have got at the bottom you have thalamus is there. Thalamus or receptacle to hold all 4 balls together. जो bottom part होता है ना फ्लावर का, that is what is thalamus is there. Done. correct sir. Okay. हो गया सर। 1 second.
Okay. Now let's discuss the process. तो यहाँ पर बेटा जो प्रोसेस है that will be taken in, देखो जहाँ रिप्रोडक्शन की बात है तो फुल प्रोसेस जो है उसको हम एक चेन में अगर हम करना चाहे तो पहले जो है फर्स्ट प्रोसेस इज योर पॉलिनेशन इज देयर. पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि जो पॉलन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहे हैं. सेकेंड प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन इज देयर, जहां पर आपका जो है पॉलन के अंदर से जो आपके जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, दे आर मीटिंग विद द एग. ठीक है. थर्ड में आपका जो है जो एम्ब्रियो है दैट इज फॉर्मिंग, ठीक है, बाय डबल फर्टिलाइजेशन. एंड फोर्थ स्टेप इज योर सीड एंड fruits are forming. And fifth step will be seed dispersal is there, जहां पर वो seed जो है it is getting dispersed. So plant evolve हुए हैं so that you know with the help of seeds मतलब it can be जो continuation of species है that can be done more efficiently कि seeds अगर थोड़ा दूर जाएंगे then they will not be fighting with each other for survival. तो first step we are taking is pollination. हाँ जी, what is pollination? Sir, the moving of pollen grains to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Very good. So pollination जो है this is of two types. One is self pollination and another is cross pollination. ठीक है. Self pollination. Next is cross pollination. Self pollination जहां पर जो है वो फ्लावर ने अपने आप को पॉलिनेट कर दिया है या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी पॉलिनेट कर दिया है. सेल्फ पॉलिनेशन, दिस सेल्फ वर्ड इज नॉट ओनली, इट्स नॉट फॉर द फ्लावर है ना, दिस सेल्फ वर्ड इज फॉर द प्लांट. अगर एक प्लांट के ही दो फ्लावर आपस में एक दूसरे को पॉलिनेट कर रहे हैं देन देयर इज नो इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज नॉट हैपनिंग. ठीक है. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज when pollen of one flower lands on stigma of same flower or flower of same plant. ठीक है. Whereas cross pollination is pollen landing on flower of another plant. तो बस ये छोटा सा प्रोसेस है ना जहां से आपका एंथर से जो है पॉलन निकलेंगे एंड दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा. अब ईच एंथर इज वेरी वेरी स्मॉल. आप अगर फ्लावर्स देखेंगे तो फ्लावर में एंथर जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है एंड ईच एंथर होल्ड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉलेंस. सो दिस पॉलेंस आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक है ना, ये पॉलेंस माइक्रोस्कोपिक होते हैं. समटाइम्स दिस पॉलेंस विद द विंड, तो विंड से जो है एंथर ओपन अप हो जाता है, पॉलेंस फ्लोट इन द एयर and then with the help of air they land on the stigma of some other plant. The stigma is sticky particle and then they get stick to the stigma part. Now this is at times, you know, it's few people are allergic to pollens, so they cannot live in hilly areas or areas where it is
there are lots of flowers or greenery is there and wind is there. तो अगर ये दो चीजें हैं तो they cannot live there. तो मतलब example is Bangalore is having lot of greenery and flowers, plus there is always some amount of air is flowing. So people who are allergic to pollens, they avoid staying in Bangalore. So हाँ जी, सर पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब एक प्लांट के अंदर ही चेंज हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट आ रहे हैं बीच में। हाँ देखो, अगर ये मेरे पास बेटा प्लांट्स हैं, ठीक है, अब इस प्लांट्स में यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर है और दिस ऑल्सो इज हैविंग अ फ्लावर हियर, और एक प्लांट हमने यहाँ पर और ले लिया है, दिस प्लांट इज हैविंग अ फ्लावर हियर, ठीक है। अब इसमें दिस और दिस आर सेल्फ पॉलिनेशन, और यहीं पर अगर if this is going like this is example of cross pollination. अब ठीक है, सर ये सारे सेम है ना फ्लावर्स? सेम Same प्लांट के हैं species. भाई। हाँ, यहाँ पर हाइब्रिड वाइब्रिड नहीं बन रहा कुछ। बट इवोल्यूशन कब होगा? व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना, एक प्लांट में तो सेम सेट ऑफ जीन्स हैं, बट अगर दूसरे प्लांट के पास जाएंगे तो दूसरा प्लांट अगर क्लोन नहीं बना हुआ था तो वो दूसरा प्लांट जो विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ जीन्स विल बी देयर, एंड बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन यू विल हैव जो zygote बनेगा will have new set of new pair of genes it will have, and then the evolution is happening. Last topic in this is agent of pollination. हाँ जी, बताएं कौन कौन है agents of pollination? One I have told you already, that is wind is there. Second, bees के लिए general आप use करेंगे insects. What else? Water is there. Water का example बताएं जहाँ water pollination में help कर रहा है। सर कोकोनट। कोकोनट। वो तो सीड ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। The lotus. लोटस, वेरी गुड। ओके, जो वाटर प्लांट्स है ना, वाटर बेस्ड प्लांट्स हैं, तो देयर वाटर इज हेल्पिंग इनटू द पॉलिनेशन, है ना। एंड फोर्थ इज Animals. हाँ जी, एनिमल्स आई विल नॉट से, इट इज बर्ड्स आई विल से, है ना। एनिमल्स हेल्प इन But like सर वो छोटे animals के फर पे पोलन्स लग जाते हैं तो उससे भी तो होता है ना। वो इंसेक्ट्स के लगते हैं बेटा, छोटे एनिमल्स के नहीं। छोटे इंसेक्ट्स जो हैं व्हेन दे आर रोमिंग अराउंड द फ्लावर तो उनके फर पे लग जाते हैं एंड देन दे गो टू द अदर फ्लावर, है ना। यहाँ पर बर्ड्स में मींस आई एम टॉकिंग अबाउट हमिंग बर्ड और सम अदर स्मॉल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, दे हेल्प इन पॉलिनेशन। एंड देन मोस्टली तो ये सब आपने यू मस्ट हैव रेड, है ना, किसमें क्लास 7th में ही था ना ये सब, यस सर। और बहुत ही जनरल बातें हैं मतलब ना। कॉपीड? यस सर। ओके,
ठीक है, these are 4 whorls are there, and sepals, perianth, stamen. ठीक है, जो आपका स्टेमेन है दे कैन बी फ्यू एंड दे कैन बी लार्ज इन नंबर, है ना। तो इस पर्टिकुलर फ्लावर में दिस इज योर स्टिग्मा इज देयर, एंड दिस इज योर स्टाइलस इज देयर, एंड these are your anthers, and these structure, these are your filaments are there. This is your, किसका डायग्राम है भाई ये, एनीवन? pollen grain. हाँ जी, एंथर विद pollen grains inside it. In this flower, if you will see, in this is your filament, and this is anther, and here this is your stylus is there, this is your stigma is there, and underneath here you will have ovule will be there. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना फ्लावर के पार्ट से रिलेटेड? No, sir. Okay, so pollination we have done. So you have got self pollination or cross pollination is there. Self pollination are of 2 types, from same flower to same flower, है ना, मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर अगर pollination हो रहा है या सेम प्लांट में pollination हो रहा है. क्रॉस pollination is between 2 plants. These are your pollination agent: wind, water, bird, insects. ठीक है, फ्लावर भी आपके जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा. दिस वी आर नॉट डूइंग इन डिटेल, बट यूजुअली जो फ्लावर्स कंप्लीट फ्लावर हम बोलते हैं वो आपका बाइसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं. ठीक है, बट देयर आर फ्लावर्स जिनमें प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो सिर्फ मेल पार्ट होता है या सिर्फ मतलब फीमेल पार्ट, है ना. मतलब फ्लावर्स में कहने का मतलब ये, यू कैन हैव अ प्लांट, आपके पास एक प्लांट हो सकता है जिसमें फ्लावर्स जो आ रहे हैं 2 टाइप्स के फ्लावर आ रहे हैं एक ही प्लांट पर, है ना. दोस फ्लावर्स आर योर फीमेल having flowers with female parts and flowers with male parts. So these are your 2 different flowers on same plant. And you can have plants जैसे date plant होता है ना, date वाला date plant is जो खजूर होता है ना, that is having male plant and female plant. उसमें अलग अलग होते हैं male और female plants. Okay, we were going for fertilization, double fertilization, है ना. चलो जी, डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स. एनीवन, व्हाट इज दिस डबल फर्टिलाइजेशन? कोई बताएगा मुझे? नो वन? ओके, सो प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जो है पहले पॉलन आकर लैंड करेगा. ठीक है, पॉलन के अंदर आपका एक होता है मेल गैमीट, एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव गॉट ट्यूब सेल इज देयर. पॉलन के अंदर ये 2 चीजें होती हैं बेटा. तो जो मेल गैमीट और ट्यूब सेल हैं, ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आपका जो पॉलन है, पॉलन इज हैविंग मेल गैमीट एंड ट्यूब सेल. ये पॉलन जो है एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा पे आएगा. ठीक है, स्टिग्मा पे इट रिसीव्स अ हार्मोनल सिग्नल. उस हार्मोनल सिग्नल रिसीव होने पर जो ट्यूब सेल है दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग. ठीक है, ये ट्यूब सेल्स जो है, ये ट्यूब सेल डेवलप हो रहा है, और इस ट्यूब सेल के पीछे पीछे जो है ये आपका मेल गैमीट जो है इट इज गोइंग इनसाइड. कहाँ जा रहे हैं ये? स्टिग्मा से स्टाइलस में. ठीक है, सो दिस इज योर pollen
from pollen tube cell is developing, and just besides the tube cell you have got a male gamete is there, and they both are heading towards ovule. ये ovule की तरफ head कर रहे हैं. यहाँ तक clear है? And somewhere in between, when they are reaching there, this male gametes divide. ये divide कर जाएगा into two gametes. Beta, just a second, you know. हाँ जी. So it's divided into two gametes and it has reached the ovule now. Clear है यहाँ तक? Okay. In the ovule में आपका जो है, you have got, this is a egg cell is there. Egg cell में यहाँ पर बेटा there is some opening is there, and here you have got 8 nucleus are there. Out of these 8 nucleus, 5 are having cell wall and 2 are at the center, and this is your main egg nucleus. ठीक है, तो यहां से जब आपका ट्यूब सेल्स के थ्रू इट इज कमिंग, इट कम्स हियर एट द ओपनिंग, है ना, ये ओपनिंग पर आता है, and from here the male gametes will enter. ये जो मेल गैमेट्स ने एंटर किया है, तो वन ऑफ द मेल गैमेट इट गोज एंड फ्यूजेस विद दिस टू न्यूक्लियस, एंड द सेकेंड मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद दिस वन न्यूक्लियस. तो यहां पर ये जो फ्यूजन हुआ है, दिस फॉर्म्स अ डिप्लॉइड zygote, and this forms a triploid cell. ठीक है, अब ये जो डिप्लॉइड सेल है, दिस फॉर्म्स योर एम्ब्रियो, और ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है, दिस इज योर एंडोडर्म, एंड इट फॉर्म्स द फूड फॉर embryo. Basically this what forms is your seed, and this is your embryo is there, and this we call it as double fertilization. So in case of angiosperm which are reproducing with the help of flowers, you see double fertilization is there. One fertilization is to form diploid cell, which in future forms your embryo, and one forms a triploid cell which forms the food for the embryo, or cotyledon, है ना, seed में जो food होता है, that is cotyledon, and this process is double fertilization. हाँ जी, क्लियर है आपको डबल फर्टिलाइजेशन? लास्ट कहाँ खो गए? Yes, sir. सर ऊपर जो 3 सेल्स है सर, वो क्या है? बेटा ये सेल्स हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. ये न्यूक्लियस है ना, इन न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल डेवलप हो जाती है, एंड देन दे आर ऑफ नो यूज. तो बेसिकली होता क्या, देखो मैं बताऊं आपको, जो
फीमेल एग है ना, it undergoes meiosis, meiosis में undergo करके it makes 8 न्यूक्लियस है ना, ये 8 न्यूक्लियस यहाँ पर वो बनाता है। साइटोप्लाज्म सेम है बट न्यूक्लियस जो है वो meiosis में undergo कर रहा है and it forms 8 parts. उन 8 पार्ट में से they align themselves 3 on top, 3 at bottom and 2 in between. अब जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनके आसपास जो है दे डेवलप सेल वॉल, ये सेल वॉल डेवलप हो जाती है इनके आसपास, ठीक है। नीचे वाला जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है उसमें भी सेल वॉल होती है बट दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज अलाउइंग वन ऑफ द मेल गैमेट्स टू एंटर इनटू इट। तो मेल गैमेट्स जब यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं मेल गैमेट्स, तो ये एक एग जो है, ये एक न्यूक्लियस ये डिस्ट्रॉय हो जाता है and one male gamete fuses with this and one male gamete fuses with this pair, है ना। बाकी 4 न्यूक्लियस हैं then they also get destroyed. So this forms your seed embryo, ये embryo बन रहा है आपका, है ना, and these together they will form your cotyledon or food for the embryo. तो आप जो अगर seed देखेंगे तो this is let's say the seed of ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल सीड इज देयर। इस सीड में ये जो पार्ट है ना, जस्ट द टिप, दिस इज योर एम्ब्रियो, और बाकी जो है दिस ऑल इज द फूड फॉर द एम्ब्रियो। ओके सर। सर जो मतलब जो पार्ट उसका फूड होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीड बना देते हैं ना, ये डिप्लॉइड था हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन में है, एंड दिस सेल्स आर ट्रिप्लॉइड। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मीटिंग ईच अदर टू फॉर्म अ, initially they are forming zygote but finally they are forming a seed, and that seed is used for the further reproduction. ठीक है जी। Yes, sir. ये आशना मैम ने कराया होगा ना डबल फर्टिलाइजेशन? याद नहीं? करवाया होगा तो सर बहुत पहले करवाया था तो ओके। भूल गए। तो टिंग 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 टिंग। कुछ नोट्स लिखने की जरूरत है इसमें? लिखना है? नो सर। नॉट No, रिक्वायर्ड। चलो ठीक है, तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, सीड्स इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना, दैट विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में विल टेक हाउ टू ड्रॉ आल्सो, है ना, आपका ड्राइंग वाला पार्ट भी आता है, हाउ टू ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, दैट विल डिस्कस, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। So let's meet next class. Sunday I am occupied, so I was planning for Sunday morning, but I have to again go to Greater Noida. Let's keep it for Monday then. ठीक है, Sunday को you have test is there, plus Sunday को SST की class है evening में, and tomorrow you have got only class is there, है ना, quadratic equation. There is no test tomorrow. So सॉक्रेटिव भी डिस्कस करेंगे कल, और फ्यू ऑफ द कल की क्लास मॉर्निंग रख सकते हो आप? नहीं बेटा, स्कूल होता है कई स्टूडेंट्स का सैटरडे मॉर्निंग। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू। Thank you. वेलकम थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम बेटा।